Hmm. Hello, everyone. A very logical day and a very logical week ahead for all of you. I hope you have taken a resolution again. Every week you need to take that. That yes, I'm going to do all the reading that is required of you. And of course, you are going to listen to all the editorial recordings that I'll be taking so that you are able to understand whether you have understood the central idea of the article or no. And of course, working on your vocabulary is something that is required. So let's see what we have in store for today. February 20, 2023, the Indian Express, the first editorial, that is the warning signals. So let's start with the reading. Trade data released last week showed that India's exports and imports have contracted for the second straight month in January. This persisting weakness in the country's trade data points towards slowing economic momentum across both the domestic and global economy. This is a worrying sign. Now, the moment we reach here, this is something that is very easy to understand. This is a worrying sign, but what is a worrying sign? That India's exports and imports have contracted. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाना मतलब रिड्यूस हो जाना, राइट? रिड्यूस होना इसका मतलब वीकन हो जाना. So this is what is said. Weakness, the persisting weakness. Now, persistent is something that is going on for 2 months. ठीक है, तो persisting है continuing. So we get to understand the meaning of the word persisting. That is continuing. Contracted, we can understand is either weaken or to reduce or to slow down. Anything? Now, the disaggregated data suggests that the fall since the second half of last year has been driven by both price and volume effects. So, this reduction is caused due to the price as well as due to the volume. Though, as a consequence, the merchandise trade deficit has narrowed in January, falling to its lowest level over the past year, while the sharp rise in the current account deficit in the second quarter of this year had raised concerns over its financing. The trends in goods and services, exports and imports in the period thereafter suggest that the deficit is likely to have peaked. ठीक है, deficit, trade deficit क्या होता है? Imports, exports में difference, right? Peak means reaching the topmost point, and hence you can use the word pinnacle. Pinnacle, summit. ठीक है, एक और वर्ड होता है एक्मे या जेनिथ. ये होता है पीक के वर्ड्स. आई हैव नॉट टेकन दिस वर्ड इन द वोकैबुलरी लिस्ट आफ्टर द डिस्कशन. सो जेनिथ, एक्मे, पिनकल, समिट, तुम यहीं पे लिख लो अभी इसका मीनिंग, पीक का मीनिंग. ठीक है, इस सेंटेंस में पीक का मीनिंग होता है राइजिंग, राइट, इंक्रीजिंग, टॉप मोस्ट पे आ जाना. तो ये सिंपल वर्ड है, टॉप मोस्ट पॉइंट. बट देन अनदर गुड वर्ड्स फॉर पीक आर पिनकल, समिट, एक्मे एंड जेनिथ. Now, data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that India's exports contracted by 6.6% in January, as per a report by investment house Nomura. Excluding oil, gold, gems, and jewelry, core exports fell by 7.5%. अगर हम इनके exports को छोड़ देंगे, तो बाकी के exports 7.5% है. और India's exports contracted by it is 6.6% overall. Right? So the basic point, the major point of this was that the exports have decreased. Right? Next, worryingly, core exports have fallen in 4 of the last 5 months as per the report, signaling the sharp slowdown in global demand as central banks across the world have tightened the monetary policy to tackle inflation. Now, see, the central banks, they come up with the task of tackling inflation.
And how is it tackled? How is inflation tackled by the monetary policy of the central bank? Right? They would bring a change in the percentages, the interest percentage हो या कोई से भी जितने भी बैंक रेट्स होते हैं उनके चेंजेस लेके आएंगे या तो वो व्हाट यू से SLR and CRR, right? They would either reduce or they would increase so as to tackle inflation or deflation. वो पूरा उनके पास वो रहते हैं वेज एंड मीन्स होते हैं कुछ बॉन्ड्स पे जो रेट्स आता है उसे चेंज कर देंगे CRR SLR को चेंज कर देंगे कम या ज्यादा बैंक रेट्स कम हो जाएंगे फिक्स डिपॉजिट के रेट्स कम या ज्यादा हो जाएंगे पर ऑल दिस is with the intention that because it is inflation so any such step will be taken that will be absorbing the liquidity from the market, right? Deflation when they'll try to bring in that liquidity in the market so that the money is there circulating in the market, right? So the monetary policy has been tightened to tackle the inflation. Now within core exports, while exports of electronic goods were healthy in January, most other segments, including the labor intensive sectors such as textiles, witnessed a decline. In fact, a majority of the 30 major export segments witnessed a contraction in January. On the other side, the latest data also shows that overall exports contracted by 3.6% in January, while 70.8% fall in gold imports is indeed welcome news. Right? इसका मतलब हमने गोल्ड को इंपोर्ट करना कम कर दिया वो भी कितना 70.8% से high gold imports have contributed to the widening of the deficit in the past. तो डेफिसिट इज एज ए सेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस तो अगर इतना इंपोर्ट कम हुआ है गोल्ड का इसका मतलब डेफिसिट भी थोड़ा सा कम हो गया होगा क्योंकि पहले क्या था हाई गोल्ड इंपोर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द वाइडनिंग ऑफ द डेफिसिट्स सो व्हेन द गोल्ड इंपोर्ट्स आर लो then this widening will be reduced also. Now, the disaggregated data shows that imports excluding oil, gold, and jewelry fell in January. This indicates a softening of the domestic demand. The softening of the domestic demand also decreases because these imports also fell. जब imports कम हो गए oil, gold and jewelry में इसका मतलब दो चीजें हो सकती है या तो domestic demand कम हुआ है या हमारे पास manufacturing कुछ ज्यादा हुआ है तो imports कम हो जाते हैं ठीक है so now this whole paragraph is actually giving you that see these imports have reduced as well as the exports they were healthy here but then these exports have also witnessed a decline. Now, in its latest World Economic Outlook, the International Monetary Fund has pegged global growth to slow down to 2.9% in 2023 from 3.4% in 2022. इसका मतलब ग्लोबल ग्रोथ कितनी थी पहले 22 में 3.4% रखी थी अब 23 में वो 2.5% ही रहेगी दिस इज व्हाट IMF has said. ठीक है now pegged is something that we have used it at least twice or thrice राइट कुछ 10-15 दिन पहले जो हमने एडिटोरियल्स करे थे उसमें पेग्ड वाला वर्ड कम से कम 2 एडिटोरियल में एक साथ आया था और मैंने एक क्विज में भी पूछा गया था रादर 2 क्विज में पूछा था मैंने राइट तो पेग्ड इज टू नेल इट और टू पोजिशन इट और टू फिक्स इट सिंपल वर्ड हो जाएगा फिक्स्ड राइट then the fund has also projected growth projected is to show in the future in world trade volumes in goods and services at 2.54% this year down from 5.4% the year before right this is the world trade growth in the world trade volume तो उन्होंने कम करी कितना ग्रोथ होगा 2.4% होगा बस now slowing global economy and the world trade suggest that the fall in India's exports can intensify further ठीक है इसका मतलब जब वर्ल्ड ट्रेड कम हो जाएगा ग्रोथ कम रखी है उन्होंने राइट एंड this volume will also reduce. So, if global economy is reducing or slowing and the world trade, the trade is also reducing. So, that means this is going to affect the exports also. Now, this will imply, देखो suggest, imply, क्या किस चीज को
इंडिकेट करते हैं, सजेस्ट और इम्प्लाई का मतलब हो गया इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करते हैं? That the boost from exports to the broader Indian economy that was observed over the past financial year is unlikely to materialize now. That means when the exports had increased, right, that was the boost we got from the exports. Boost भी हमने कर लिया है, थोड़ा सा help, थोड़ा सा push that it got from the exports. The Indian economy got, right? That is unlikely to materialize now. अभी दिखेगी नहीं. क्यों? क्योंकि वो बाकी चीजों के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगी फिर. So with the other drivers of growth constrained in their ability to stimulate growth, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए थे तो इंडियन इकोनॉमी भी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिखेगा नहीं. क्यों? क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं या तो जो ग्रोथ को लेके आते हैं, वो फैक्टर्स दे आर कंस्ट्रेन्ड, राइट? These drivers of growth are constrained, matlab limited in their ability to stimulate growth. They are not able to stimulate growth. Therefore, the growth that was stimulated by the exports will not be seen much, right? मतलब ऐसा सोचो कि एक ही बंदा काम कर रहा है, उसको पुश करके आगे तक लेके जाएगा, लेकिन बाकी जो धीरे धीरे हैं, बाकी के जो फैक्टर्स हैं, वो आगे बीच में कहीं पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि वो उस ग्रोथ को एंड टारगेट तक नहीं पहुंचा सकते. सो व्हाट इज दिस एक्सपोर्ट गोइंग टू डू ऑल अलोन? वो नहीं कर सकेगा, राइट? सो आई रीड दिस सेंटेंस अगेन. This will imply that the boost from exports to the broader Indian economy that was observed over the past financial year is unlikely to materialize now. With the other drivers of growth constrained in their ability to stimulate growth, at this critical juncture, the policy apparatus should be guided by the objective of facilitating exports and deepening India's trade relations. This is what should be done. Right? Now, see, two paragraphs, or rather, the first paragraph was totally based on the data about the export and the import reducing. Then core exports पे आया था. So this slowing economic momentum across both the domestic and the global economy is a worrying sign. मतलब चिंता का विषय है. That is it. Now, because the core exports have fallen, because he stated the point first that see, this is cause of concern. राइट? ये तो चिंता का विषय है. उसके बाद क्यों विषय है जैसे why is it to be that we are worried over this matter? ठीक है, आगे ऐसा क्या होगा इंडिया में or the Indian economy? How is it going to be affected by this slowing down in the imports and exports? Right? This is what he has explained now. When he says that the core exports have fallen, this will be a signal for the sharp slowdown in the global demand as central banks across the world have tightened monetary policy to tackle inflation. Right? So, when they tighten the monetary policy, when they tackle inflation, the demand is reduced. The global demand has decreased then. This indicates a softening of the domestic demand also. Right? If the global demand is decreasing, the domestic demand is also decreasing. Now, this IMF expect global growth to slow down to this much. That means the target is very low, 2.9% तक ही बस growth हो सकेगा. So projected growth in the world trade also is dicey. So there is a fall in the India's exports and this can intensify further. इसका मतलब क्या हुआ? That see, when it says that the exports have fallen, right? This is a cause of worry. Why is it a cause of worry? Because the exports in the core exports, that is called, even that is decreasing. ठीक है, import उन्होंने एक बार कहा imports भी कम हो रहे हैं. So that means what? The domestic demand is decreasing. If the domestic demand is decreasing, the exports decrease, the imports decrease. Exports decrease because of the slowdown in the world trade also. Right. And all this is going to intensify the exports. The fall in exports will still continue.
ये और होता जाएगा, ठीक है. So therefore he says that see this is a cause of worry. Now what is to be done? The ability to stimulate growth are the drivers. The policy patterns should be guided by the objective of facilitating exports and deepening India's trade relations. That means the policies should be made such that they facilitate exports. एक्सपोर्ट्स को फोकस करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव रखेंगे. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स का कम होना मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम, राइट. So trade data underlines the slowing economic momentum across the domestic and global economy. ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ का पॉइंट. ये कम होता जा रहा है एंड दिस इज अ कॉज ऑफ worry. So what is to be done? It is needed that the policies are made in that with that particular objective in mind. And what is the objective? To boost the exports. So now you can narrow down this central idea, no? That see, it's a cause of worry, it's a cause of concern. What is the cause of concern? The slowdown in the trade, right? The slowdown in the global trade as well as the domestic trade is a cause of concern. And the policymakers should make it this their objective that whatever policies they are making should be boosting the Indian exports. So focusing on the Indian exports will be actually facilitating or bringing about a growth in the Indian economy. Clear? ध्यान से पढ़ लेना तो समझ में आएगा, क्योंकि डेटा डेटा था काफी सारा तो उसे हम छोड़ सकते थे. अब अगर हम वोकैबुलरी पे आते हैं तो मैंने वर्ड्स तो सिंपल लिए बट यू अंडरस्टैंड. आई स्टिल ट्राई, मे बी दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर समबडी. सो परसिस्टेंस होता है. परसिस्टिंग इज टू कंटिन्यू. सिंपल भाषा में उसे हम कंटिन्यू बोलेंगे. नाउ कंटेक्चुअली समझो. परसिवियरिंग और डिटर्मिन भी परसिस्टिंग होता है. But persevering and determined would mean that, okay, fine, you will keep going on. That is continue, right? Stick, he was very persistent. Matlab he was sticking to his own um, statements, you can say, to his own argument, you can say, or sticking to his own thought process. बड़ा अडामेंट हो जाना, अडामेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर यू जस्ट स्टिक टू. और क्योंकि हम एडर करते हैं, अपनी ही बातों पे डटे रहते हैं, तो वो इंसिस्ट हो जाता है. इंसिस्ट का मतलब भी होता है कि बार बार बोलना. तो परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू. अब कॉन्सिक्वेंसेस में वी कैन गेट दिस वर्ड इफेक्ट, रिजल्ट एंड आउटकम. वेरी इजी वर्ड्स. बट देन इफ आई यूज दिस वर्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंस, right, it was not of consequence. That means it was not of importance. तो importance, significance and magnitude इसका meaning हो जाता है. एक और meaning होता है. Otherwise consequence हो जाएगा अपने पास effect, result, outcome. हम consequences भी बोल सकते हैं. Now to tackle something means to address that problem. And when you address that problem, it becomes to confront. ठीक है, कन्फ्रंट हो सकता है, चैलेंज करना है. रेसल करना मतलब हाथापाई. हाथापाई नहीं होता है जैसे जंग छेड़ना, या रेसल करना मतलब रेसल को क्या बोलते हैं, कुश्ती. हाँ, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से कुश्ती कैसे करोगे? व्हेन यू आर डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग दैट प्रॉब्लम, दैट मीन्स. तो आप जब प्रॉब्लम का सामना करोगे मतलब क्या हुआ कि यू आर रेसलिंग द प्रॉब्लम. सो दैट इज टैकलिंग द प्रॉब्लम और अड्रेसिंग द प्रॉब्लम. हम एड्रेस कर सकते हैं, मैंने लिख लिया यहाँ पे. तो एड्रेस द प्रॉब्लम और यू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम, सामना करना. डिक्लाइन का तो बहुत इजी वर्ड है, मुझे पता है, तुम सबको भी पता ही है कि डिक्लाइन, रिड्यूस, ड्रॉप तो होता ही है, डिक्रीज करना. बट देयर इज वन वर्ड दैट इज वेन. ठीक है, तो वेन इज डिक्लाइन, रिड्यूसिंग. ये मेनली हम मून के हिसाब से करते हैं. तो मून जब न्यू मून से, मतलब जिस दिन अमावस होती है उस दिन से वो जब फुल मून पे जाता है, ठीक है, फुल मून बन जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून. उसे वैक्स कहते हैं.
लेकिन फुल मून से जब वो धीरे धीरे करते हुए गायब ही हो जाएगा, वो नो मून रहेगा, मतलब न्यू मून। ठीक है, तो वो जो कम होता है उसे कहते हैं वेनिंग ऑफ द मून। तो वैक्स यानी बढ़ना और वेन यानी कम होना। ठीक है, उस हिसाब से वेन को भी समझ सकते हैं कि वेन मीन्स टू डिक्लाइन। नाउ डिक्लाइनिंग इन द क्वालिटी बिकम्स डिटेरियोरेशन, डिक्लाइनिंग इन द पेशेंट्स कंडीशन मीन्स डिटेरियोरेट। ठीक है, दूसरा डिबिलिटेट होता है, तो डिबिलिटेट का मतलब होता है वीकन। ठीक है, तो सबका मीनिंग डिक्लाइन ही होता है। But then these are three better words that you can relate to the word decline, and therefore I've used it. Otherwise, decline and incline is such an easy word, it was not required to discuss it. But this passage, as it is, did not have many difficult words. But yes, we can get but better words than wane, deteriorate, and debilitate. Imply means hint. सजेस्ट हमारे पास पैसेज में ही था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सजेस्ट का मीनिंग सभी को लगता है कि सजेस्ट यानी सजेशन देना, कोई लेट्स गो फॉर अ मूवी, ये सजेशन है। चलो मैं दूं अपना एक सजेशन, ये इसका टाइप ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये वाली फॉन्ट नहीं ये वाली फॉन्ट यूज होनी चाहिए। ठीक है, पीपीटी का बैकग्राउंड ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये सजेशंस होते हैं, राइट। बट देन व्हाट डज दिस प्रेजेंटेशन सजेस्ट? तो वो सजेशन नहीं देगा, यहाँ पे सजेस्ट का मतलब होता है सिग्नल करना, किस बात को वो इंडिकेट कर रहा है, किस बात को वो फोकस कर रहा है, किस बात का वो हिंट दे रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सजेस्ट, इम्प्लाई, पॉइंट, इंडिकेट। नाउ यू कैन एक्चुअली कीप ऑल दीज फाइव वर्ड्स टुगेदर। कंस्ट्रेंट इज कंट्रोल्ड, लिमिट में रहना, गार्डेड और रिजर्व्ड हो जाएगा रिजर्वेशंस वाला, कि जो हम पूरी तौर से ओपनली वी डोंट कम इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सो वी आर ऑफ अ रिजर्व्ड नेचर, राइट, वैसा वाला। तो रिजर्व मतलब वी आर गार्डेड, सोच समझ के बात करेंगे तो गार्डेड हो जाता है। कंट्रोल्ड यानी ठीक है, मैं जब कुछ बोलना चाहता हूँ वो एकदम से नहीं बोल सकता हूँ खुले, तो फिर मैं थोड़ा सा रुक के बोलूंगा, तो इसको हम गार्डेड कहते हैं। वे आर अवेयर दैट सी वेदर यू शुड स्पीक आउट और नो, सो इन दैट वे यू आर कंस्ट्रेंड, राइट। सो कंस्ट्रेंड, कंट्रोल्ड, गार्डेड, रिजर्व्ड, all, if you have understood, all would be together. Facilitating, we have done this word facilitate karna, facilities milna, is to make some work easy. So facilitating would be easing, assisting, smoothing, and expediting is one good word for it. So those who do not know this word, kindly note it down. And those who are listening to this recording for the very first time or second, third time, so kindly keep a notebook with you so that you are able to write down all the difficult words, right? And of course, then you will be revising also, no? As I say that you write down for the complete week and then revise on Saturday, Sunday. Revise it on Friday and Saturday so that Sunday you are able to attend the quiz. Pegged is, as I had said earlier, pegged is something that is fixed. एक और वर्ड मैं पहले दे चुकी हूँ, उसको नेल्ड कहा था। एक प्रॉपर पोजीशन पे उसे फिक्स कर देना इज टू बी पोजिशनड, राइट। टुडे आई गिव यू अदर वर्ड्स, फिक्स के साथ सिक्योर्ड और फास्टेंड होता है। Why I use this word is you'll be able to remember this word fasten. हम प्लेन में जाते हैं तो fasten your seat belt, कई बार आता है ना fasten your seat belt, तो fasten का मतलब होता है उसे टाइट कर लेना। दूसरा सिक्योर का मतलब होता है आप करते हो ना, he secured the first rank। ठीक है, in this way that is your position, so you can use this word secured as pegged, that means at a proper position, right? So that is it. Now something extra this week, what you have to do is you have to read on these topics, और ये सारे words अभी आए हैं इस में एडिटोरियल में ना। सो ट्रेड डेफिसिट तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर पढ़ लिया इकोनॉमिक्स, इवन इफ यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट, यू रीड ऑन दीज आर्टिकल्स, एटलीस्ट 1 or 2 आर्टिकल्स आप ट्रेड डेफिसिट पे पढ़ लो कि आखिर ये होता क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी आप पढ़ोगे। कोर एक्सपोर्ट्स उसने कहा था, कोर एक्सपोर्ट्स की बात की थी उसने, और एक कहा था लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल्स। उसने एक एग्जाम्पल दिया बस टेक्सटाइल्स का, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते कौन कौन से हैं, राइट, एंड
वो लेबर इंटेंसिव क्यों है या एनीथिंग अबाउट दोज थिंग्स, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू एवरी सेकेंड मंथ आ जाता है। लेटेस्ट रिव्यू में अपने एसएलआर या सीआरआर का जो है कितना 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट से कम होना, ज्यादा होना, ठीक है, जो भी होता है, आप उसको पढ़ोगे एंड यू एवरी मंथ यू कीप फॉलोइंग दिस। ये पूरा तुम्हारा जीके में भी होगा। उसे फॉलो भी करना है कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली इन्फ्लेशन को टैकल करती है। सो यू रीड अबाउट द वेज एंड मीन्स इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, राइट? उसे सीआरआर का नंबर इंक्रीज कर दिया, मतलब कैश रिजर्व रेशियो अगर वो बढ़ा देगी basis 50 basis points से, इसका मतलब it is trying to absorb the liquidity from the market and making the banks keep their cash with the RBI। ठीक है, तो आपको ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि इन्फ्लेशन को एब्जॉर्ब करना, इन्फ्लेशन को टैकल करना, मतलब लिक्विडिटी जो है मार्केट में उसे कम करना। और लिक्विडिटी कम करना इसका मतलब कि सीआरआर वो बढ़ा सकते हैं। कैश रिजर्व रेशियो 4% है तो 4.25% कर लो। इसका मतलब बैंक्स कैश मार्केट में नहीं देगा, किसी को लोन थोड़ा सा कम दे देगा और आरबीआई के पास उसको रखना पड़ेगा, राइट? द सेम थिंग द कमर्शियल बैंक्स कैन डू कि उन्होंने एफडी का रेट बढ़ा दिया। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ा देगी ना 5.5 से लेके अगर वो 6.25 कर देती है, so what will we do? Instead of spending money in the market, we will not do that. We'll keep the money in the bank so that we get a better return there. Right? So these are small, small things which, when you read monetary policy and how it tackles inflation, how it tackles deflation, right? How, what all is mentioned in the monetary policy, how these percentages or the change in the percentages or in the ratios would help, दैट इज ऑल यू नीड टू रीड। तो धीरे धीरे आप उसको पढ़ना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं। आप एक टॉपिक भी रोज पढ़ते हो तो आपका वीक के लिए रीडिंग टॉपिक हो गया, राइट? आई होप यू फॉलो दिस एंड दिस इज समवे गोइंग टू हेल्प यू। डोंट टेक इट लाइक अ बर्डन, एज आई ऑलवेज से। आपको करना है काम, वी कैन ओनली गाइड यू, राइट? We can bring the horse to the water, we can't make him drink it. So all of the mentors here, we can suggest many things to you, we can guide you, we can help you, we are here for you, but ultimately you have to take the action, right? And I hope you at least believe that yes, all this is going to help you। ठीक है, मतलब मैंने क्लास में भी बोला है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि बस हमें करना है ऐसे ही, नहीं, हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आप लोग इससे बेनिफिट करो और धीरे 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 करके आप सब टॉप पे पहुंच जाओ। So, with this positive note, let us end this session now. And we have the full day, full week still to go. And so, all the best for the week and have a logical week ahead. Thanks.